हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद इतिश्री। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, इसको हम कहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और इंटरप्रेटेड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट, वेट, इनकम, रन रिकॉर्ड्स। ओके, अभी सपोज एक वर्ड्स में एक डेटा दिया हुआ है, आप बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स आप उसको इंटरप्रेटेड कर सकते हैं। ओके, तो डेटा टाइप टू टाइप्स होता है। ओके, वन इज़ ऑन ग्रुप डेटा एंड अनदर वन इज़ ग्रुप डेटा। ऑन ग्रुप डेटा क्या होता है? जो रॉ डेटा होता है, जिसका ग्रुपिंग नहीं होता है। ओके, सपोज द मार्क्स ऑब्टेन इन ए क्लास लाइक 10, 15, 20, 25, 30। ओके, दिस आर नॉट ग्रुप्ड। ओके, और ग्रुप डेटा क्या होता है? डेटा अरेंज्ड इन क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसीज। फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्लास के मैथ्स मार्क्स है ये। ओके, आउट ऑफ 30। सो इसका एक क्लास इंटरवल होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। ओके, सपोज एक क्लास के बच्चे 0 to 10 मार्क्स रखे हैं, 5 स्टूडेंट्स। ओके, सो फ्रीक्वेंसी हो गया 5। 10 to 20 तो फ्रीक्वेंसी 8। लाइक दैट वी कैन ग्रुप द डेटा। ओके, सो जितने भी आपके क्लास 10th के क्वेश्चन आते हैं वो सब ग्रुप डेटा में होते हैं। ओके ओके, सो मीनिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अभी आपको एक कलेक्शन ऑफ डेटा मिल गया। ओके, तो फर्स्ट आप क्या करोगे? उसका एवरेज फाइंड आउट करोगे। ओके, तो और एक मिनिमम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करोगे। सो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी? जैसे एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसका एवरेज और द मिड वैल्यू हम लोग कैसे फाउंड आउट करेंगे? उसका 3 मेजर्स है। ओके, फर्स्ट वन इज़ योर मीन, सेकेंड इज़ योर मीडियन एंड थर्ड वन इज़ द मोड। मीन क्या होता है? जो एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा होता है। ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मीन। ओके, और मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। सपोज एक डेटा कलेक्शन, ये एक डेटा टेबल है, उसका मिडिल वैल्यू क्या होगा? 10। ओके, फॉर एन एग्जांपल लाइक दैट। अभी मीन हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया, मीडियन हो गया, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। ओके, और मोड हो गया वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अभी इसका मोड क्या है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? अभी 8। ओके, so 10 to 20 class. Okay, like that. Okay, so मीन फाइंड करने के लिए हमारा 3 मेथड है। ओके, वन इज़ योर डायरेक्ट मेथड, अनदर इज़ योर एज्यूम मेथड एंड थर्ड वन इज़ योर स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट मेथड इज वी कैन रिप्रेजेंट द मीन एज x बार. For direct method, it is equals to summation of fi xi divided by summation of fi. Okay, where xi is the class mark and fi is the frequency. For an example, we will consider one numerical. Okay, let's say this is the table. Okay, this data is given, class and frequency. It's the marks of a class. Okay, by the student. Okay, so the class and frequency is given 0 to 10, 5, 10 to 28, 20 to 37. Okay, so first we have to find out the class mark x. Okay, that is how we'll find out the mid value. You have to find out from 0 to 10, the mid value is 5. Okay, that is the class mark. In 10 to 20, the class mark is 15. And in 20 to 30, class mark is 25. Okay, after that we have to find out fx. Okay, fx is, this is your f frequency and this is x. 5 into 5 is 25, 8 into 15 is 120 and 7 into 25 is 175. Okay, now the formula for, to find out mean for direct method is fi xi into summation of fi, that is summation of frequency. What is the summation of frequency here? So it will be like 5 plus 8 is 13 plus 7 is 20. So this is the summation of
f is equals to 20. Then the numerator part is summation of fi xi. We have calculated fx. Okay, so it will be equals to summation of fx will be equals to 320. Okay, now we can easily find out the mean. So mean will be equals to summation of fx divided by summation of f, or fixi by fi. That is 320 divided by 20. So you will get the mean as 16 by using direct method. Got it? ओके अभी हम आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड पे. ओके, ये कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? जहाँ numbers are large. Okay, if numbers are large means you will find difficulties in calculation part. So in that we will use this assumed mean method. Okay, उसमें फॉर्मूला है आपका मीन इज इक्वल्स टू a प्लस summation of fi di by fi. Okay, in the direct method only fi xi by summation of fi xi by fi. Okay, but in assumed mean method one a will be added and instead of x you will write d. Okay, don't confuse in that. Okay, and this d is equals to x minus of a. Okay, you will be more clear in an example. Okay, let's see one example. See, a group of data is given. Okay, here. Okay, like class is given and frequency is given. Okay, so class mark we have to find out. Class mark is equals to the middle term you have to write. Okay, 15 here is 25, 20 to 30 is 25 middle term, and 30 to 40 it's 35. Okay, then next part is to find di. Di is equals to what? xi minus of a. A is the assumed frequency. Somehow we have to assume the frequency in between. Okay, the middle frequency we have to assume. Okay, here we can assume the frequency as 25. Okay, for an example, let's say some other data are there like 0, 10 and 20, 30 or 30, 40 and 40, 50 like that. Then we will assume the data is assume the frequency as 30. Somehow you have to assume the middle one. Okay, so here we will assume the frequency as 25. Okay, so then next part is to find the value of di, which is xi minus of ai. Xi value is here 15 and a is, we have assumed a as 25, the middle frequency. Okay, in this total table, here the total table, this is the middle part and the frequency of this is 25. Okay, so this is minus 10, that is 15 minus of 25 is minus of 10, then 25 minus of 25 is 0 and 35 minus of 25 is 10. Then next part is you have to find out fi di. That is fi di is this is 3 into minus 10 is minus 30, 7 into 0 is 0 and 5 into 10 is 50. Okay, next part is we have to find out the summation of fi. This is your frequency table. So summation of f will be equals to, this is 7 plus 3 plus 7 is 10 plus this is 15. Okay, next we have to find out fi di. So summation of fi di is will be equals to 50 minus of, that is 20. Okay, and here a we take it as 25. Substitute all the value. So mean will be equals to x bar is equals to a is 25 plus summation of fi di is 20 divided by summation of f is 50. Okay. Okay, so the answer after calculation you will get the answer as 26.33. Okay, so this is how we will find out the mean by using by assumed mean method. Okay, and the last one is your
Okay, that's the step deviation method. The third one is, which is very important, okay. To find out the mean, formula is x bar equals to a plus fi ui divided by summation of fi into h, where a is the assumed frequency and ui, this is how you can find out this ui is equals to xi minus of a divided by h. h is the class width, okay. एक एग्जाम्पल करते हैं, ओके ओके इसमें this is one example, okay. Here the class is given, frequency is given, okay. So you have to find out the mean, okay. So first by using step deviation method, first क्या करेंगे हम xi फाइंड करेंगे. xi कैसे फाइंड करते हैं हम, इसका मिडिल वैल्यू, क्लास का मिडिल वैल्यू ले लेना है. 10 और 20 का मिडिल वैल्यू कितना है 15, 20 30 का 25, 30 40 का 35 एंड 40 50 का हो गया 45, ओके. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको एक एज्यूम्ड फ्रीक्वेंसी ए फाइंड आउट करना है. ए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये मिडिल वैल्यू लेते हैं ये क्लास के, ओके. ये 10 22, तो इसमें मिडिल वैल्यू कितना है, इसमें हो आ गया हमारा 30, ओके. सो विल एज्यूम दिस इज 30, ओके ओके. और एच हमारा क्लास विड्थ हो गया. क्लास विड्थ मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ओके. या 20 और 10 का डिफरेंस है 10, 30 20 का डिफरेंस है 10, 30 40 का 10, 40 50 का 10. सो क्लास विड्थ हो गया हमारा, एच हो गया 10. तो यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एस एच. फॉर दिस फर्स्ट क्लास आई एम डूइंग, ओके. प्लस यू इक्वल्स टू 10 20, वेयर एक्स आई कितना है हमारा फॉर फर्स्ट क्लास के लिए 15 है, माइनस ऑफ ए इज 30. So 15 minus of a divided by 10, which is equals to minus of 15 divided by 10. So this is minus of 1.5. Okay, like that we will do the calculation and we will get this table like this. Okay, the next part we have to find out f into ui. So f is this one and this table you have to multiply. 4 into minus of 1.5 is minus of 6. 6 into minus 0.5 minus 3. This is 4 and this 2 is 3. Okay, what the formula says? It is equals to a plus summation of FUI. So summation of FUI you will get, FU is equals to, you will get, after doing the calculation you will get this value as minus of 2, okay. Then summation of frequency f, you will get this as, this is 10 and 20. Now substitute the value in the formula. So x mean is equals to x, that is a value is 30 here, plus summation of fu is minus 2 divided by the summation of frequency is 20 into h is your width is 10. So you will get the answer mean is 20. You will get this value as 29. Okay. So clear everyone? कोई कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. जैसे फ्रीक्वेंसी फाउंड कैसे करते हैं, एज्यूम फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ, ओके. आपको अगर कुछ डाउट है तो पूछना, ओके. ओके, ये हो गया आपका कैसे हम मीन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ओके. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे मोड मीडियन फाइंड करते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, ओके. और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो. नोट्स के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, ओके. थैंक यू एवरीवन.